ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 17 ಮಂದಿ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧುರಾಜ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮೇಘಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 7 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 17 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. प्रभावशाली प्रस्तुत पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2024 में अयोध्या में आपने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। की तनिक भी परवाह न करते हुए आप नदी में कूद पड़े और चारों की जान बचाते हुए आपने अद्भुत बहादुरी का उदाहरण पेश किया। प्रेरणादायक तथा मानवता का एक उत्तम उदाहरण पेश किया। की जान बचाई। इतना ही नहीं, त्वरित बुद्धि का परिचय देते हुए आपने तुरंत गैस के सिलेंडर को बड़ी बहादुरी से वहां से हटाया। अर्जित किए। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि आपकी कुशलता, लक्ष्य के प्रति गंभीरता को दर्शाती है। सुंदरकांड तथा भगवद गीता शामिल है। आपको राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको सराहना भी प्राप्त हो चुकी है। देखने लायक है और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने खड़ा हुआ है। केया हटकर की अति गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರ್ಣೀಯ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ಸಮೂಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. वाले हर एक बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चमत्कार क्रिया किए हैं, तो किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। किसी ने हेल्थ केयर और इनोवेशन के जरिए लोगों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है।